Hello traders and welcome back to another video. So today we have a very important thing to discuss, and that is what was the reason behind this crazy fall in gold and silver. Gold abhi is down about 16% from its highs and silver is down about 35% from its highs. You can clearly see कि बहुत ही मतलब एक काफ़ी अग्रेसिव मूव आया है एंड ऑफ कोर्स काफ़ी बेरिश मोमेंटम है राइट नाउ इन गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट्स. सो वील डिस्कस द रीज़न बिहाइंड दिस एंड इसके पीछे टू बी ऑनेस्ट एक क्लियर रीज़न नहीं है इन दोनों ही फॉल के पीछे. देर आर मल्टीपल रीजन्स एंड we'll discuss all of those reasons in this video. So let's get right to the video. Before we begin this video, I would just like to give a very quick disclaimer कि this video is just for educational purposes and मैं सिर्फ यहाँ पे अपने thoughts and ideology share कर रहा हूँ on the market and मैं यहाँ पे कोई भी buy या sell recommendation नहीं दे रहा हूँ. So मैं अपने account में trades ले रहा हूँ. That is all that I'm talking about here. So with that, let's get into the video. So let's discuss why gold is now down by about 16% and silver is down by 35%. I have written the top 3 reasons that I believe that this is happening. First being Donald Trump has recently nominated Kevin Warsh to be the next Fed chair. अब इस चीज़ का कैसे अफेक्ट हो रहा है on the metals? So market expect करा था और dovish Fed. Dovish meaning that someone who would lower interest rates, but Trump ने nominate कर दिया है Kevin Warsh को. Now Kevin Warsh is a hawkish person, which means that he would support the dollar, which means fewer rate cuts in the future. And जब rate cuts कम होंगे, that means that कम dollar print होगा, कम fiat currency आएगी market system में, and that is something that gold and silver are not liking right now. मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था और डविश फेड बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प का जो स्टांस है दैट हैज बीन टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम डे वन, बट द पर्सन दैट ही इज नॉमिनेटेड टू बी द नेक्स्ट फेड चेयर काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट फैक्ट, एंड दिस इज समथिंग दैट द मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट रियली लाइकिंग बिकॉज एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट एक रिजल्ट आया है, दैट इज केविन वॉश बीइंग नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट फेड चेयर बाय डोनाल्ड ट्रम्प. इन रिस्पॉन्स टू दिस ऑफ कोर्स गोल्ड में वीकनेस है, सिल्वर में वीकनेस है एंड डॉलर में स्ट्रेंथ है. बिकॉज Kevin Warsh is a hawkish person, that means that he would support the dollar, and that is why we can see that on the day of this announcement we saw dollar move up by 1% intraday. So of course that is not a real very big move, but that is still strength in the dollar, which gold and silver are not really liking. इसके अलावा ऑफ कोर्स प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है बिकॉज वी वर एट सच हाइज एंड ड्यू टू दिस सिचुएशन वेयर ट्रम्प हैज नॉमिनेटेड केविन वॉश, तो वी सॉ सम काइंड ऑफ अ फ्लैश क्रैश एंड प्रॉफिट टेकिंग एज वेल इन दीज मेटल्स. सो यही 3 मेजर रीजंस हैं. अदर देन दिस देयर इज अ फोर्थ रीजन, दैट इज CME has raised margin requirements to trade gold and silver, so that is another big reason, but I don't really know a lot about that honestly. So and वो कैसे impact कर रहा है, all I know is that now you have to put up higher margin to be able to trade gold and silver, and so that kind of affects the metals. But उसके अलावा I don't really know in depth कि क्या reason है and क्यों उन्होंने ये किया है, so I'm not really be going to talk about that. But if you want to find out more about that, you can maybe read articles online and study about why this happened. So मेरे हिसाब से यही 3 major reasons हैं. That is Trump ने hawkish Fed nominate किया है, that is Kevin Warsh. USD में we've seen strength because of that, and now we are seeing profit taking and flash crashes along the way. So this is why gold and silver are down currently. As for my position on silver, you can see that I've been trailed out. मैंने अपना जो stop loss है, I trailed that to 109.865, and I'm very glad कि मैंने ऐसा कर दिया था because otherwise I would have lost almost all of my profits, or at least half of my profits. So I'm very glad that I did that. And actually में ये मैंने stop loss जो trail किया था, I had done this, had trailed my stop loss below market structure in the 4-hour time frame.
एंड बिकॉज आई न्यू कि मतलब जो ये रैली है ओवर स्ट्रेच, सी सबको पता था कि ये रैली बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है. इट्स जस्ट दैट नोबडी न्यू कि ये कहाँ तक ओवर स्ट्रेच रह सकती है एंड कहाँ पे वील फाइनली सी दैट ब्रेकिंग पॉइंट. एंड राइट नाउ इस चार्ट को देख के इट डज सीम लाइक वी हैव हैड द ब्रेकिंग पॉइंट एंड यहाँ से अब बुल्स हैव लॉस्ट मोमेंटम एंड बेयर्स आर इन कंट्रोल. So we didn't really know कि वो किस point से होगा, so it was very important that I managed my risk and that is why I was trailing my stop loss higher and higher with market structure. And finally मेरे को price action ने बाहर निकाला out of the trade. Actually मैं इसी दिन बाहर हो गया था, if you can see this candle. So I got out of my trade on Thursday, but then we saw even a bigger crash on Friday. So I'm really glad that I stopped out and I believe I made around let me just quickly check and I'll let you guys. I think it's between $2,600 to $2,800, but I would like to clarify that this was in a demo account and by no means am I saying कि ये मैंने असली पैसे बनाए या something like that. ये जो demo account had started this when I was just learning about my strategy and मैं अपनी strategy को back test करना चाहता था and मैंने strategy को back test किया and then I wanted to see कि ये demo account पे work कर रही है या नहीं. So after now I've been trading for about 6 months on this demo account, so I can clearly say कि हाँ demo account पे it is working. And so yeah, but I still want to run this demo account for now because this is the only account that I have a track record on, even if it's just 6 months. But I'll continue to run this demo account with my new swing challenge account. So that is something that I'm doing, although I'm not really taking any more trades on the demo account for now. And yeah, that is something that I'm doing. So my stop loss मेरा trail out हो गया था on Thursday itself, and then we saw a bigger crash on Friday. So this was a very good trade for me, even though if it was in demo. And I hope I had more trades like this, but honestly ये जो move था is very rare and this happens like once in a decade. And so I'm really glad that I caught this move in some way or the other, and yeah, just really happy to have been a part of this move. And now that silver has taken me out of this move, I don't really plan to take any more trades on silver because I want कि silver थोड़ा पहले cool down हो जाए. We've had a lot of volatility in the past couple of months and I'm not really looking to trade silver जब तक कि मेरा कोई setup नहीं बनता है या I see clear price action one way or the other. So I'm just waiting for direction in silver. Then moving on to GBP JPY, ये trade भी मेरा swing challenge account में है and what we can see here is कि हम support से काफ़ी अच्छा bounce कर रहे हैं, but we're kind of struggling near the highs over here. So let's see कि कैसा play out करता है ये trade. Currently मेरी bias still bullish ही है on this forex pair, and what I'm looking to do is I'll probably trim my stop loss if we do get a higher push from here, but अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, so I'm still waiting on that and let's see if we head higher. So इस trade में my risk is about 0.5% of my account, that is $50, and so I'm risking $50 on this trade. उसके अलावा मेरे को इस ट्रेड पे एक्चुअली पॉजिटिव स्वॉप्स मिल रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड अ थिंग दैट आई रिसेंटली लर्नड अबाउट. मतलब मेरे को काइंड ऑफ आइडिया था दैट देयर आर नेगेटिव स्वॉप्स एंड देयर आर पॉजिटिव स्वॉप्स, बट मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो कैसे वर्क करता है. बट नाउ आई नो हाउ इट वर्क्स. सो इट्स बेसिकली लाइक स्वॉप इज आप अपने ब्रोकर को एक फीस देते हो टू होल्ड योर ट्रेड ओवरनाइट. मतलब आप अगले दिन अपना अगर ट्रेड ले जाना चाहते हो तो आप अपने ब्रोकर को एक फीस देते हो एसेंशियली. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि समटाइम्स ब्रोकर आपको एक फीस वापस करता है टू होल्ड दैट ट्रेड. मतलब द ब्रोकर रिवॉर्ड्स यू इन सम वे टू होल्ड दैट ट्रेड. नाउ आई डोंट रियली अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट, बट व्हाट आई बिलीव इट टू बी इज कि like I'm holding GBP JPY towards the long side. Now I believe that there are not a lot of people who are doing this because people believe that Bank of Japan is going to intervene and we'll see a strong yen, and so we could see bearishness in this pair for some time. That is what they believe, and
मतलब बैंक ऑफ जापान का इंटरवेंशन का आई ऑल्सो थिंक दैट कुड हैपन, but I still believe in the macro side of things of this pair, and so I have my bullish bias still intact. But इतने कम लोग इसको लॉन्ग साइड पे होल्ड करें that the broker is paying me a positive swap or kind of like a positive fees or a reward to me for holding this trade on the long side. So that is what I understand. I could be a bit wrong, so please do your own research on this, but that is what I understand from this. सो आई एम लुकिंग टू होल्ड दिस ट्रेड जब तक मेरे को प्राइस एक्शन नहीं निकालता है एंड मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, एंड आई विल कंटिन्यू टू इसमें एक्चुअली मैं अपना स्टॉप लॉस हायर ट्रेड नहीं करता हूँ इन फॉरेक्स पेयर्स. व्हाट आई बिलीव इन डूइंग इज कि या तो मेरा प्रॉफिट हिट होता है या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, एंड दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ पोजिशन दैट आई एम गोइंग टू बिल्ड ओवर टाइम आई थिंक, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर हायर प्राइसेस टिल 221. So let's see if that happens, and I'll continue to update you guys on this trade. Another trade that I have is on the Nikkei, and ये मेरे swing challenge account में ही है, but this one has been a really frustrating one for me right now, because I'm a swing trader and मेरी जो strategy है that essentially means that I have to hold positions for weeks and weeks, and जब मैं trade से बाहर निकलता हूँ तो I get out very quickly, but अगर वो trade मेरे direction में जाने लगता है तो I hold it for as long as it wants to go in my direction, and जब तक वो मेरा stop loss hit नहीं करता है. So you can see I took this trade here on Tuesday, and then we saw a push higher the next 2 days. उसके बाद we're just consolidating it seems. हम बार बार highs की तरफ जा रहे हैं, and then we are testing the demand over here. So let's see how this plays out, but इतने time से this hasn't really done anything, it's just going sideways, and I'm happy to hold the trade because इस पे कोई मेरे को negative या positive swap, मतलब मेरे को कोई negative swap नहीं लग रहा है. It's zero, मतलब I don't really have to pay anything to the broker, and the broker doesn't really have to pay me anything, so it works fine. And जब तक मेरा stop loss hit नहीं होगा on this trade, I'll continue to hold this. Now a lot of people were asking me, my friends, कि Bank of Japan intervene करेगा, so Japanese yen strong होगा, and doesn't that mean that the Nikkei should go lower because it's the index, and usually what happens is कि अगर कोई करेंसी ऊपर जाती है तो उधर का मार्केट नीचे जाता है. बट टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट रियली अ 1-to-1 रेशियो कि अगर जापानीज येन ऊपर जाएगा तो नीके नीचे आएगा. It's not really like that, even though a stronger yen does mean some kind of weakness for the Nikkei, but ये एक 1-to-1 ratio नहीं है, and there are a lot of other factors that are affecting the Nikkei, and so I'm happy to hold the trade as long as price action wants to keep me in. And जैसे ही we'll break above these highs, above 54,100, then I look to trail my stop loss, and I can actually see कि we did try and go over there, but I think ये supply बहुत ज़्यादा strong है right now, and let's see if we can break above this level, and then I'll look to trail my stop loss and maybe take my stop loss into profit on this trade. So let's see how this plays out, and I'll continue to update you guys कि मेरा trade कैसा जा रहा है. And yeah, मेरी जो thinking थी on this was that नीके में मैंने ये ट्रेड इसलिए लिया था बिकॉज मेरे को अच्छा सेटअप दिख रहा था. वी हैड दिस प्रायर हाई एंड वी वर रीटेस्टिंग दिस. उसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे वो नीके के लिए बुलिश थे एट द टाइम, एंड अभी भी हैं. इट्स जस्ट दैट वी हैव गॉन फ्रॉम वेरी बुलिश टू नाउ समवॉट न्यूट्रल, एंड सो अभी भी मैं बट इस ट्रेड में हूँ until price action takes me out. So that is it for the Nikkei. Another chart that is interesting is Bitcoin. सो बिटकॉइन के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट जब हमने यहाँ पे हायर ब्रेक किया था तो आई थॉट वी वुड रीटेस्ट दिस एंड देन गो हायर फ्रॉम हियर, बट थैंकफुली मैंने वो ट्रेड नहीं लिया बिकॉज एंड मैंने वो ट्रेड लिया इसलिए नहीं बिकॉज जब हम ये डिमांड दोबारा रीटेस्ट कर रहे थे तो जो फैक्टर्स थे दे वर नॉट रियली सो बुलिश फॉर बिटकॉइन, एंड उसके अलावा येन कैरी ट्रेड was a thing that was there in my mind, and I believe कि जो हम ये pressure देख रहे हैं in Bitcoin is due to yen carry trade. For those of you who don't really know what this means is मैंने पहले भी yen carry trade पे एक dedicated video बनाई है, but I'll quickly explain what's going on. So Bank of Japan is looking to raise interest rates. अब पहले क्या होता था कि जापान का इंटरेस्ट रेट इतना कम होता था
कि इन्वेस्टर्स जापान की करेंसी में लोन्स लेते थे सो दैट दे हैव टू पे लोअर इंटरेस्ट रेट टू द बैंक, एंड वो हायर रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करते थे या हायर यील्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते थे. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि जापान इज लुकिंग टू रेज इंटरेस्ट रेट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं इन रिस्की एसेट्स और इन रिस्क ऑन एसेट्स, एंड वो वापस कर रहे हैं वो पैसा टू द बैंक ऑफ जापान सो दैट दे डोंट हैव टू पे द हायर इंटरेस्ट रेट. सो आई थिंक दैट इज समथिंग जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बिकॉज बिटकॉइन डज वेल इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, लोन लेना आसान होता है. बट बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट हाइक बाय जापान दैट इज गोइंग टू बी कमिंग, उस वजह से इट फील्स लाइक अ ग्लोबल रेट हाइक, एंड बिकॉज ऑफ विच मार्केट में थोड़ी सी लिक्विडिटी अफेक्ट हो रही है एंड लोगों के पास सरप्लस पैसा नहीं है, इन्वेस्टर्स कहीं से बोरो नहीं कर पा रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बिटकॉइन, एंड वी कैन एक्चुअली सी कि हम आई थिंक वीकली टाइम फ्रेम के किसी डिमांड लेवल पे हैं. या सो वी आर टेस्टिंग दिस वेरी मेजर सपोर्ट लेवल back from April 2025. So let's see how Bitcoin holds here, or if it continues to break down and if it goes lower. So I'm keeping an eye on this chart, and to be honest मैं Bitcoin को ट्रेड ही कर रहा हूँ अभी के लिए, मतलब as in मैं Bitcoin को usually ट्रेड ही करता हूँ. I don't really invest in crypto as much, although I do have some coins, but I'm not really actively investing, या फिर मेरा कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं है इन क्रिप्टो. सो आई एम फाइन ईदर वेज, इवन इफ इट गोज लोअर इट डजंट रियली मैटर, एंड लेट्स सी हाउ दिस प्लेज आउट. Another trade that I'm looking to take is on NZD CHF, so which is New Zealand dollar against the Swiss franc, and इसके अंदर I'm looking for a breakout of this supply, and then I want price to retest to make this a demand and retest it and head higher from here. So न्यूजीलैंड डॉलर या न्यूजीलैंड से जो डेटा आ रहा है दैट हैज़ बीन प्रिटी स्ट्रॉन्ग फॉर द करेंसी, एंड सो आई एम बेटिंग ऑन द न्यूजीलैंड डॉलर फॉर द शॉर्ट टर्म. एंड आई बिलीव क्योंकि इस पेयर में वी हैड अ लॉट ऑफ सेलिंग, एंड जो ट्रेंड है वो वैसे ओवरऑल बेरिश है ऑन द हायर टाइम फ्रेम्स, बट आई डू सी दैट मे बी वी कुड प्रॉब्ली गेट अ पुल बैक, एंड वी कुड हेड टू ये 0.382 वाला फिब लेवल, and we could have even if we just have a retracement, so I think we could go back to this level because we have strength in the New Zealand dollar in the short term at least, and so I'm looking to take this forex pair higher if it does break above this supply. So let's see if that happens, and I'll update you guys agar मैं कोई trade लूँगा तो on the YouTube channel. With that, let's end the video here. I just wanted to, the main part of this video was that I wanted to discuss कि हमने गोल्ड एंड सिल्वर में ये जो बेरिश अग्रेसिव मोमेंटम देखा है वो क्यों देखा है. दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजन्स, एंड अदर देन दैट आई बिलीव कि अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स वर हाईली लेवरेज्ड इन गोल्ड एंड सिल्वर, एंड उस वजह से वी आर सीइंग दिस फ्लैश क्रैश, एंड आई बिलीव दिस वॉज नेसेसरी इन सम वे और द अदर. And to be very honest, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि whether or not we should invest in gold or silver right now, of course this is not financial advice, but I would probably say no, even after this crash that we've had of about 16%, because I believe that there are lower prices to come, and मैं personally invest नहीं कर रहा हूँ, and I'm not really looking to invest at these levels. Although if we do maybe pull back to somewhere over here, like in the $4,000 or 3,900 level, then I'll really look at gold and silver from an investing perspective. But to be honest, I think मैं silver में invest नहीं करूँगा. I'll probably do it in gold later on if we do get lower prices, and that is what I'm thinking of doing here. So आज की इस वीडियो में इतना ही. I hope you understood the reason as to why गोल्ड एंड सिल्वर में हमने इतना ज़्यादा बेरिश मोमेंटम देखा है, एंड आई होप कि ये वीडियो एजुकेशनल थी एंड यू गाइज लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर.